Hello children, how are you? I hope you all are doing well, studying well and taking a lot of interest in English. So बच्चों क्या आपको पता है कि slowly and gradually, okay, our lives are changing, okay, we are getting more towards more westernized, don't you think so? And have you seen the people who stay abroad? They are trying to inculcate are things like आप देखोगे yoga has become very common in foreigners, okay, and we are moving towards westernization. So is it good or is it bad? Is it good to adapt to somebody else's culture and forget what our culture is? That's the story going to be about, okay? It's called karma. All right, so let's do a quick warm up first. Our India is undoubtedly affected by the Western culture. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप अग्री करते हो कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें बहुत इन्फ्लुएंस किया है? हाउ फार डू यू फाइंड योर सेल्फ फॉलोइंग द सेम कल्चर मिक्सड विद इंडियन आइडियोलॉजीज? ओके, क्या आपको लगता है ओके दैट यू योर सेल्फ आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेम कल्चर मिक्स, ओके, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी इंडियन आइडियोलॉजीज भी फॉलो कर रहे हो? Okay, and what are the advantages of Western culture? Western culture के advantages क्या है? All right, so think about it and do share this with your friends or teachers. All right, now let's do a quick synopsis and find out what this chapter is about. Karma is a story written by Indian writer Khushwant Singh. It was originally published in 1989 in Singh's The Collected Stories. Karma is about an Indian gentleman who tries to adopt upper-class English culture and lifestyle through methods such as speaking the Queen's English, neglecting his Indian wife, and reading English newspaper. So ये karma जो story है ये लिखी है इंडियन राइटर खुशवंत सिंह ने, और इसमें उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखा है, ओके, अबाउट एन इंडियन जेंटलमैन जो अपर क्लास इंग्लिश कल्चर एंड लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है, एंड ही ट्राइज टू स्पीक द वे द क्वींस इंग्लिश इज, ही ट्राइज टू कम्युनिकेट इन दैट इंग्लिश लैंग्वेज. फिर उसके साथ साथ वो अपनी इंडियन वाइफ को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल. सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज अबाउट and whether it is for that person's good or not. Let's see what happens. All right. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station. Okay. So Sir Mohanlal जो है खुद को देख रहे in a mirror at the first class waiting room near the station. Okay, at the station. The mirror was obviously made in India. The red oxide at its back had come off at several places, and long lines of translucent glass cut across its surface. Sir Mohanlal smiled at the mirror with an air of pity and patronage. So अब Sir Mohanlal जो है वो स्टेशन पे खड़े हैं, ओके, नियर द फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, ओके, और वो खुद को मिरर में देख रहे हैं. जो मिरर जो था इट इज़ ऑब्वियसली वो इट वॉज मेड इन इंडिया, ओके, एंड क्योंकि उस मिरर के कई भागों में से उसका रेड ऑक्साइड निकल रहा है, ओके, टू दोज लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट, ओके, अक्रॉस द सर्फेस. अब ये सर मोहन लाल जो है वो स्माइल भी कर रहे हैं उसको देख के, ओके, और उनको दया भी आ रही है, ओके, लुकिंग एट द मिरर. यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इनएफिशिएंट, डर्टी, इंडिफरेंट ही मोमेंट. अब वो मिरर को कह रहे हैं कि तुम इस कंट्री के लोगों के जैसे कितने इनएफिशिएंट हो, कितने गंदे हो, ओके, एंड यू नो यू आर सो indifferent, you're just like all other Indians. The mirror smiled back at Sir Mohan. अब जो मिरर था वो मोहन को देख के he smiles back, okay. You are a bit of all right, old chap, it said. अब मिरर उनसे कह रहा है कि you are a bit of all right, old chap, तो कहता है कि तुम ना you are a bit, you are like सब सही है वैसे टाइप के हो.
distinguished, efficient, even handsome. So that means you are like a perfect person, distinguished ho, efficient ho, handsome ho, that neatly trimmed mustache, okay, the suit from Savile Row with the carnation in the buttonhole, the aroma of eau de cologne, talcum powder, and scented soap all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. So the mirror is, just the mirror is describing the old man. He says to the old man that you are just like that perfect person. You are distinguished, you are efficient, you are handsome. Look at your mustache; it is so neatly trimmed. ये जो सूट आपने पहना है, it is from Savile Row. It has carnation in the buttonholes, carnation on the flowers, okay. Then you are wearing the cologne, okay, it's known as the eau de cologne, okay, जो perfume उन्होंने लगाया है, talcum powder लगाई है, scented soap की खुशबू आ रही है. So it says, yes, old fellow, you are a bit of all right. Sir Mohan threw out his chest, smoothed his balliol tie for the umpteenth time, and waved a goodbye to the mirror. ओके, सब सर मोहन को ये सुनने के बाद उनकी छाती और चौड़ी हो गई. ओके, एंड देन वो अपनी टाई को सीधी कर देते हैं. ओके, एंड कितनी बार तो उन्होंने अपनी टाई को सीधी किया, और उसके बाद देन ही सेज बाय टू द मिरर एंड ही लीव्स फ्रॉम देयर. ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच. देयर वाज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन. कोई है? सो ही सेड, ओके, अब वो अपनी घड़ी देखते हैं और सोचते कि देयर इज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन. So he asked, "Koi hai? Is there anybody around?" A bearer in white livery appeared through a wire gauge door. "Ek chota," ordered Sir Mohan, and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Okay, so अब वो कहते हैं मतलब there is still time to have a quick drink. Okay, so he asked, "कोई है क्या?" सो अब एक बैरर आया एक वाइट लिवरी में. ओके, थ्रू द वाइट गॉज डोर. ओके, अब सर मोहन उसको ऑर्डर देते एक छोटा दे दो, और फिर वो एक कुर्सी में बैठ जाते हैं एंड ही ड्रिंक्स एंड ही इज सिपिंग ओवर द ड्रिंक. आउटसाइड द वेटिंग रूम, सर मोहन लाल्स लगेज ले पाइल्ड अलोंग द वॉल. ओके, अब वेटिंग रूम के बाहर उनका लगेज जो है वो दीवार से सटक के रखा गया था. On a small grey steel trunk, Lakshmi, Lady Mohanlal, sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. अब उस ट्रंक के ऊपर एक उसी लगेज के एक ग्रे कलर के स्टील के ट्रंक के ऊपर लेडी मोहनलाल मतलब मोहनलाल की वाइफ लक्ष्मी बैठी है. ओके, वो पान चबा रही है. ओके, और न्यूज़पेपर से खुद को पंखा कर रही है. She was short and fat and in her middle 40s. She wore a dirty white sari with a red border. Okay, अब वो जो है शॉर्ट है, she's fat, she's in her mid 40s, और उसने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी है जिसकी लाल कलर की बॉर्डर है, and that white sari is not so clean. On one side of her nose glistened a diamond nose ring, and she had several gold bangles on her arms. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. Okay, so अब उसने डायमंड की नोज रिंग पहनी है. ओके, बैंगल्स पहने, सोने की बैंगल्स पहने, चूड़ियाँ पहनी है. ओके, एंड वो उस बैरर के साथ बात कर रही थी जब तक सर मोहन ने उसको अंदर नहीं बुलाया. ओके, अब जैसे ही वो बैरर वहाँ से निकल गया, उसने जो वाइफ थी लक्ष्मी, उन्होंने कूली को आवाज़ लगाई. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. Okay, जैसे ही वो वेटर या बैरर वहाँ से निकल जाता है तो वो एक कूली को आवाज़ लगाती है और उसको पूछती है, where does the zenana stop? That means where is the ladies room? Okay, so she is now looking at the ladies room where it is. Where do the ladies stop? Okay, so he says right at the end of the platform. So the coolie flattened his turban to make a cushion, hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform. So now she wanted to know where is the ladies, where do the ladies coach come? Okay, where does that compartment come of the ladies? तो अब वो जो है कूली अपने टर्बन का गोल करके उसके ऊपर अपने सर पे रखता है और उसके ऊपर उसका ट्रंक रख देता है. ओके,
लेडी लाल picked up her brass tiffin carrier and ambled along behind him. अब लेडी लाल जो है वो उसके पीछे पीछे अपना ब्रास का डब्बा लेके चल पड़ती है. Okay, so on the way she stopped by a hawker's stall to replenish her silver beetle leaf case and then joined the coolie. अब रास्ते में ही बीच में एक दुकान आती है, पान बीड़ी की शॉप आती है, तो पान की शॉप से वो अपने जो ब्रास का जो डिब्बा होता है उसमें अपना सामान दोबारा से रीफिल कर देती है. ओके, जो उसका पान का जो सामान था वो उसको रीफिल कर देती है. एंड देन शी सैट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक विच द कूली हैड पुट डाउन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. और फिर वो वहाँ पे लेडीज़ के यहाँ तक पहुँच जाती है और फिर दोबारा से अपने ट्रंक पे बैठ जाती है और कूली के साथ बातें करना शुरू करती है. उसको पूछती है, आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स, तो क्या इस लाइन के ट्रेन्स हमेशा इस लाइन के ट्रेन्स में भीड़ रहती है. These days all trains are crowded, but you'll find room in the zinana. तो कहते हैं हाँ आजकल तो सारी ही ट्रेन्स में बहुत भीड़ होती है, बट लेडीज़ में आपको जगह मिलेगी, लेडीज़ कंपार्टमेंट में आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी. Then I might as well get over the bother of eating. Okay, so अब वो कहते हैं हाँ तो फिर ठीक ही है, भीड़ है तो मैं अच्छा है मैं खा लेती हूँ. Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches, drawing lines in the gravel with his finger. Okay, so वो अपने फिर अपने बैग में से वो एक डिब्बा निकालती है and then she starts eating चपाती and आम का अचार. अब जैसे वो जब खा रही होती तो कूली उसके सामने बैठा है and he is just playing around in the sand, on the soil there. Okay, are you traveling alone, sister? So अब वो कुली पूछता है उसको, आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, क्या आप अकेली ट्रैवल कर रही हो दीदी. तो शी सेज नहीं आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर, ही इज़ इन द वेटिंग रूम. He travels first class. He's a vizier and a barrister and meets so many officers and Englishmen in the trains, and I'm only a native woman. I can't understand English and don't know their ways, so I keep to my zinana interclass. सो वो कहते नहीं मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, वो वेटिंग रूम में बैठे और वो जनरली फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते क्योंकि ही इज़ अ विजियर, दैट मीन्स ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ बैरिस्टर. ओके, सो एडवोकेट है, लॉयर है एंड बहुत सारे ऑफिसर्स से उनकी मुलाकात होती है, इंग्लिश मैन से मुलाकात होती है ट्रेन पे. मैं तो एक आई एम जस्ट अ नेटिव वुमन, मतलब आई एम जस्ट अ लोकल इंडियन वुमन. ओके, एंड मुझे उनके इंग्लिश वेज समझ में नहीं आते एंड आई कैन नॉट इवन स्पीक इन इंग्लिश, तो इसके लिए आई प्रेफर कि मैं जिनाना, दैट इज़ द लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाऊँ विच इज़ इंटर क्लास. Lakshmi chatted away merrily. She was fond of a little gossip and had no one to talk to at home. अब लक्ष्मी उसके साथ बातों में खो जाती है एंड उसको गॉसिप करना भी बहुत पसंद होता है जो उसको घर पे करने के लिए कोई उसके साथ नहीं है. Her husband never had any time to spare for her. She lived in the upper story of the house and he on the ground floor. He did not like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow, so they never come. अब वो जो लेडी है लक्ष्मी जो है वो ऊपर वाले माले पे रहती है और जो मोहनलाल है वो नीचे वाले कमरे में रहते हैं एंड यू नो इन दैट बंगलो. तो और उनको पसंद नहीं है कि उसके अनपढ़ रिलेटिव्स उनके घर पे आए, इसके लिए उनके घर पे कोई भी नहीं आता. He came up to her once in a while at night and stayed for a few minutes. तो कभी कभार वो उसको मिलने रात को आ जाते थे और फिर थोड़ी देर रुक के निकल जाते थे. He just ordered her about in anglicized Hindustani and she obeyed passively. Okay, so जो भी उसको ऑर्डर देते थे in his English language, English is a mixture of English and Hindi, okay, and वो जो भी वो कहते थे उसको obey करती थी. These nocturnal visits had, however, borne no fruit. Okay, that means even though he used to come at night, okay, there was no fruit. मतलब उनका कोई बच्चा नहीं हुआ. Okay, so she still does not have any child. The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train. अब signal green हो गया है and the bells have rung. The train is about to achieve the platform. Lady Lal hurriedly finished off her meal. जल्दी जल्दी वो अपना खाना finish कर देती है and she got up still licking the stone of the pickled mango
and she emitted a long loud belch as she went to the public tap to rinse her mouth and wash her hands. Okay, और फिर वो डकार लेते लेते okay, अपना हाथ और अपना मुंह धो के आ जाती. After washing she dried her mouth and hands with the loose end of her sari. तो खाना खाने के बाद भी मुंह धोने के बाद वो अपना हाथ और मुंह साड़ी के पल्लू से पोंछ देती. And she walked back to her steel trunk, belching and thanking the gods for the favor of a filling meal. Okay, so उसके बाद वो दोबारा अपने ट्रंक के पास पहुंच जाती है, and then वो she prays to God कि thank you for such a lovely meal that I have had and it was quite satisfying. The train steamed in. Lakshmi found herself facing an almost empty interclass zenana compartment next to the guard's van at the tail end of the train. So अब train स्टेशन पे आ जाती है एंड लक्ष्मी जब वो बोर्ड करती है ज़नाना में इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट, शी सीज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, काफ़ी जगह है वहाँ पे, एंड शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन, ओके, विच इज़ एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन. The rest of the train was packed. She heaved her squat, bulky frame through the door and found a seat by the window. Okay, अब she is like really happy that बाकी train तो it's quite full, okay, but she's got a place to sit, okay, और वो window के पास बैठ जाती है. She produced a 2 आना bit from a knot in her sari and dismissed the coolie. Okay, तो coolie को वो 2 आने देती है और उसको थैंक यू बोल के उसको भेज देती. She then opened her beetle case and made herself 2 beetle leaves charged with a red and white paste, minced beetle nuts and cardamoms. तो अब फिर वो अपने पान का डब्बा खोल देती है, ओके, उसमें से वो 2 पान के पत्ते लेती है और उसमें कुछ लाल कलर की और वाइट कलर का पेस्ट लगा देती है, ओके, एंड देन वो बीटल नट्स को थोड़ा क्रश करके और उसमें थोड़ा सी इलायची डाल के देन दीज शी थ्रस्ट इनटू हर माउथ, ओके, वो अपने मुंह में डाल देती है एंड देन टिल्ट हर चीक्स, ओके, साइड में, मुंह के साइड में, गाल के यहाँ पे रख देती है, ओके, गालों के पीछे वाले साइड पे, ओके, इनसाइड हर माउथ शी कीप्स इट ऑन बोथ द साइड्स. Then she rested her chin on her hands and sat gazing idly at the jostling crowd on the platform. फिर वो अपने चिन पे हाथ रख ऐसे बैठ जाते हैं ना, that is keeping her hand on the chin and she is just watching outside on the platform. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's sang Freud. Okay, तो ये जो ट्रेन आई तो it did not disturb Mohanlal's sang Freud. That means ability to keep calm in dangerous or difficult situation. Okay, that is known as sang Freud. Okay, so he continued to sip his scotch and ordered the bearer to tell him when he had removed the luggage to a first class compartment. So he was pretty this thing, it did not he was not bothered about the situation. जब तो वेटर को बोल देता है जब ट्रेन आएगी तो बता देना और मेरा जो लगेज है वो जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दोगे तो मुझे बोल देना. तब तक he is just having this, continues to have the sip of the scotch that he is drinking. Excitement, bustle and hurry were exhibitions of bad breeding. And Sir Mohan was eminently well bred. Okay, तो उनको लगता है कि ये एक्साइटमेंट, बसल, हरी जो होता है ये उन लोगों के लिए है जो वेल प्लान नहीं होते हैं, ओके, जो चीज़ों को हैपहैज़र्डली लेते हैं. बट फॉर हिम ही वॉज लाइक pretty settled person and he did not have to rush around like this in full excitement. He wanted everything tickety-boo, okay, and orderly. So उनके लिए सब कुछ एकदम perfect होना चाहिए. It has to be a satisfying thing for him. So he was like a perfectionist. In his 5 years abroad, Sir Mohan had acquired the manners and attitudes of the upper classes. He rarely spoke Hindustani. So अब जितने साल वो बाहर पढ़ाई के लिए गए थे, 5 साल थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने सारे अपर क्लास के मैनर्स सीख लिए थे, उनके एटीट्यूड सीख लिए थे, ओके, एंड वो रेयरली वो हिंदुस्तानी में बात करते थे, ओके, लाइक रेयरली ही स्पोक इन हिंदी लैंग्वेज. व्हेन ही डिड इट वाज लाइक एन इंग्लिश मैन्स only the very necessary words and properly anglicized. Okay, so जब भी वो हिंदुस्तानी में बात करते थे तो it was like the way English men spoke. Okay, only few necessary words, okay, and properly anglicized types. Okay, so properly उसमें English accent आता था. But he fancied his English
finished and refined at no less a place than the University of Oxford. So he loved the way he spoke in English. Okay, it was so finished, it was so refined. Okay, it was as though he's speaking right from the University of Oxford. He was fond of conversation, and like a cultured Englishman, he could talk on almost any subject: books, politics, people. How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman? So, and उनको बात करना बहुत पसंद था, और वो कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते थे, जैसे बुक्स पे बात कर सकते थे, पॉलिटिक्स पे बात कर सकते थे, लोगों के ऊपर बात कर सकते थे. एंड बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ऐसे हुए कि लोगों ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिए, because he spoke so well in English, just like the way Englishmen spoke. Sir Mohan wondered if he would be travelling alone. It was a cantonment and some English officers might be on the train. His heart warmed at the prospect of an impressive conversation. Okay, अब वो सोच रहे थे कि क्या मैं अकेला ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है और मे बी यहाँ पे कोई इंग्लिश ऑफिसर्स शायद से ट्रेन में आ जाए. ओके, दे मे माइट बोर्ड द ट्रेन. सो ही वाज लाइक प्रिटी हैप्पी एंड प्रिटी प्लीज्ड कि अब उनको किसी के साथ एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्जेशन करने का मौका मिलेगा. He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did. Okay, but although he thought about all these things, but कभी उन्होंने ऐसे दिखाया नहीं कि हाँ Englishman is there so I should talk and all that thing. वो वैसे नहीं, तो जैसे Indians used to try to make a conversation with the English, वैसे उन्होंने कभी किया नहीं. Nor was he loud, aggressive and opinionated like them. Okay, और कभी वो Indians की जैसे loud नहीं थे. Okay, he was very soft spoken and he was never aggressive like the Indians were. Okay, कभी मतलब बड़े शांत दिमाग पे, या opinionated मतलब या किसी को जज करने वालों में से नहीं थे. Okay, he went about his business with an expressionless matter of factness. Okay, so वो अपने काम से मतलब लगते थे and it did not matter to him about anything else. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. So एक corner में बैठ जाते थे window के पास and newspaper निकालते थे. He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle. Okay, अब वो पेपर को भी इस तरीके से fold करते थे ताकि उस पेपर का नाम लोगों को नजर आए. Okay, and he is busy solving the crossword puzzle in the paper. The Times always attracted attention. उनको पता था कि जब जो कोई भी टाइम्स पढ़ता है, it was like like a great thing. So he knew that. Okay, someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I have finished it. So उनको पता था कि it was like a prestigious thing to read the Times. तो इसके लिए पेपर पढ़ के होने के बाद वो उसको अपने साइड में रखते थे. ओके, तो जिसको अगर पढ़ना है वो उनसे मांग के लेता था. सो दैट gesture was to say that मेरा पढ़ के हो चुका है पेपर, you can take it. Perhaps someone would recognize his balliol tie, which he always wore while traveling. Okay, तो वो सोचते थे कि शायद से लोग मेरी जो balliol tie है, okay, balliol, he went to the Balliol College in Oxford. So तो उनको लगता था कि ये balliol की tie मैंने पढ़ी है तो लोगों को समझ में आए कि मैं balliol गया था to study. Okay, that would have opened a vista leading to a fairyland of Oxford colleges, masters, dons, tutors, boat races and rugger matches. Okay, so because of that, it would be like it would open a box of treasure, जैसे कि because he's been to a college in Oxford, so that would give a chance to people to talk about it. Okay, तो लोगों को एक मौका मिलता है to with taking the context of Balliol. Okay, Oxford गए थे आप पढ़ाई करने के लिए, आपने क्या किया. So it was फॉर हिम ऑक्सफर्ड जो था एक फेरी लैंड से कम नहीं था. ओके, क्योंकि ऑक्सफर्ड के कॉलेजेस, मास्टर्स, डॉन्स, ट्यूटर्स, बोट रेसेस, रगर मैचेस आर द मैचेस विच आर कंडक्टेड ऑफ रग्बी. ओके, रग्बी इज द स्पोर्ट ओवर देयर. सो ये काफ़ी फेमस थे वहाँ के. सो इफ बोथ द टाइम्स एंड द टाई फेल्ड, ओके, तो उनको लगता था कि अगर टाई की वजह से या द टाइम्स की वजह से अगर किसी ने उनके साथ बात नहीं की या कॉन्वर्जेशन नहीं छेड़ा, देन सर मोहन वुड कोई है
his bearer to get the scotch out. तो फिर सर मोहन आवाज़ लगाते थे to the waiter, okay, कोई है, and ask that person to get a scotch. Whiskey never failed with Englishmen. उनको लगता था कि whiskey is a good icebreaker with Englishmen. तो इंग्लिशमैन विस्की का ग्लास देखते ही किसी के साथ भी बात करना शुरू कर सकते. देन फॉलोड सर मोहन्स हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फिल्ड विथ इंग्लिश सिगरेट्स. ओके, तो उसके बाद वो अपना गोल्ड सिगरेट केस निकालते थे जिसमें इंग्लिश सिगरेट्स होते थे. इंग्लिश सिगरेट्स इन इंडिया, how on earth did he get them? Sure, he didn't mind. And Sir Mohan's understanding smile. Of course, he didn't. Okay, so मतलब it is like, you know, a curiosity raise करता है दूसरों के दिमाग में कि English cigarettes इनको कहाँ से मिले. Okay, so it is like, sure, he didn't mind, okay, smoking them, and you know, he used to give this understanding smile also. Okay, of course, saying that he didn't mind smoking the English cigarettes. But could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? Okay, so but could he use, क्या वो Englishman का इस्तेमाल कर सकते as a medium to commune, okay, to commune with his dear old England? Okay, can he communicate with that person about dear old England? Those 5 years of grey bags and gowns, of sports blazers and mixed doubles, of dinners at the Inns of Courts and nights at Piccadilly. Okay, now he's thinking about those 5 years जो उन्होंने इंग्लैंड में बिताए थे. Okay, जहाँ पे there were grey bags, there were gowns, okay, sports blazer पहनते थे लोग, okay, then and mixed doubles, okay, they used to play mixed doubles, okay, of dinners, okay, at the Inns of Court and nights at Piccadilly. Okay, 5 years of crowded, glorious life worth far more than the 45 in India with his dirty, vulgar countrymen with sordid details of the road to success, of nocturnal visits to the upper story, and all too brief sexual acts with obese old Lakshmi, smelling of sweat and raw onions. Okay, so उनको लगता था ये जो 5 साल उन्होंने इंग्लैंड में बिताए वो सबसे ग्लोरियस डेज थे उनके लाइफ के देन द 45 years जो उन्होंने इंडिया में बिताए. ओके, एंड ही यूज्ड टू फील दैट कि इंडियंस जो है दे आर वेरी डर्टी, ओके, दे वेरी वल्गर. At the same time, he used to talk about the sordid, that means distasteful, scornful, जो रस्ते हैं to success, okay, the way people achieve success in a bad manner, okay, by bribing people, okay, or asking for bribes and all that thing. And then he also thought about the nocturnal visits, that is the night visits, when he used to go to the upper story, okay, for all too brief sexual acts with his fat or obese old लक्ष्मी जिससे उसको सिर्फ पसीने की और कच्चे प्याज की खुशबू आती थी. Okay, so Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installation of the Sahib's luggage in the first class coupe next to the engine. Okay, अब उनका जो ये था attention था, it was his thought process was stopped by the waiter. Okay, उन्होंने उसको आवाज़ लगाई कि आपका लगेज जो है वो फर्स्ट क्लास कूपे नेक्स्ट इंजन के बाजू में जो फर्स्ट क्लास कूपे है उसमें रख दिया गया है. सर मोहन वॉक टू हिज कूपे विद अ स्टडिड गेट. ओके, सो अब सर मोहन उठ के अपने कूपे के पास जाते विद अ स्टडिड गेट. Okay, that means, carefully and अच्छे से gracefully walking around. Okay, with this then he was dismayed. The compartment was empty. With a sigh, he sat down in a corner and opened a copy of the Times he had read several times before. Okay, अब he was like really sad because उन्होंने देखा कि compartment तो खाली है. Okay, एंड वो एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं. ओके, दोबारा से अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं एंड ही स्टार्ट रीडिंग इट. और उन्होंने वो न्यूज़पेपर ऑलरेडी बहुत बार वो पढ़ चुके. सर मोहन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. हिज फेस लिट अप एज ही सॉ 2 इंग्लिश सोल्जर्स ट्रजिंग अलोंग, लुकिंग इन ऑल द कंपार्टमेंट्स फॉर रूम. ओके, अब उनकी नज़र जाती है विंडो के बाहर तो देखते हैं कि 2 इंग्लिश सोल्जर्स जो है, ओके, दे आर ट्राइंग टू पीप अराउंड एवरीवेयर, ओके, टू सी, ओके, इफ देयर इज़ एनी रूम अवेलेबल, कहीं पे कुछ खाली है क्या. ओके,
They had their haversacks slung behind their backs and walked unsteadily. Okay, so they were wearing those haversacks, okay, and they were walking steadily trying to find out any room. Sir Mohan decided to welcome them even though they were entitled to travel only second class. अब Sir Mohan सोचते कि I'll welcome them into the first class, हालांकि they are eligible to travel in the second class. He would speak to the guard. One of the soldiers came up to the last compartment and stuck his face through the window. Okay, अब Sir Mohan जो है उन्होंने guard के साथ बात कर ली उनके लिए. Okay, and one of the soldier he came through the window. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. अब तो एक soldier जो है उसने देखा कि there is one berth जिस पे कोई है नहीं. Okay, air, Bill. He shouted, one air. Okay, so he told Bill that there is one here. Okay, so one here. His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. तो उनका companion भी आ जाता है. Okay, वो अंदर झाँक के देखता है और वो मोहन को देखता है, Sir मोहन को देखता है. Get the nigger out, he muttered to his companion. अब वो जो है दूसरा वाला जो है अपने दोस्त से कहता है कि get this nigger out. Okay, nigger means get this person. Okay, get this Indian out of this compartment. So they opened the door and turned to the half smiling, half protesting Sir Mohan. Okay, अब वो door खोल के half smiling, half protest जो Sir Mohan है उनको अपने compartment से बाहर फेंक देते. Reserved? Yelled Bill. ये reserve किया है आपने? Is this reserved? Janta reserved, army fauj, exclaimed Jim, pointing to his khaki shirt. Ekdam jao, get out. So now they are trying to push him out of that compartment and they are making fun of him, they are mocking him. I say, surely, protested Sir Mohan in his Oxford accent. अब मोहन जो है अपने ऑक्सफर्ड एक्सेंट में उनके साथ बात करे. The soldiers paused. It almost sounded like English, but they knew better than to trust their inebriated ears. The engine whistled and the guard waved his green flag. Okay, so अभी हालांकि सर मोहन ने इंग्लिश में बात की, उनको सुनाई भी दिया कि it sounded more like the English, okay, Oxford English, but still they did not want to get carried away or get influenced. Okay, तो उनको लगा था कि that we are drunk, okay, we are under the influence of alcohol, so maybe हमें वैसे सुनाई दे रहा है. Okay, is what those soldiers thought. Okay, अब engine has whistled, guard has waved the green flag. They picked up Sir Mohan's suitcase and flung it on the platform. और वो Sir Mohan का suitcase उठाते और उसको platform पे फेंक देते. Then followed his thermos flask, okay, briefcase, bedding and the Times. Sir Mohan was livid with rage. Okay, उसके बाद उनका सूटकेस के बाद उनका थर्मस फ्लास्क फेंक देते हैं, उनका ब्रीफ केस फेंक देते हैं, उनका बेडिंग फेंक देते हैं, उनका न्यूज़पेपर फेंक देते हैं, दैट इज द टाइम्स. ओके, अब सर मोहन को बहुत गुस्सा आता है. ओके, preposterous, he shouted, hoarse with anger. I'll have you arrested. God. तो वो उनको preposterous means nonsense. This is so weird. Okay, I'm calling the guard, and then वो guard को आवाज लगाना शुरू कर दे. Bill and Jim paused again. It did sound like English, but it was too much of the king's for them. So उनको pause कर गए, मतलब उनको लगा कि कोई English में इतना it was sounding like the English of Queen. Okay, so the Britishers' English is what they found. Keep your ruddy mouth shut. And Jim struck Sir Mohan flat on the face. अब वो Jim जो है वो मोहन के face पे उनको चाटा लगाते हुए कहते हैं, keep your ruddy mouth shut. Okay, the engine gave another short whistle and the train began to move. The soldier caught Sir Mohan by the arm and flung him out of the train. Okay, अब ये soldier जो है जैसे ही train move होने शुरू हो गया, soldier ने उनको उठाया और उनको train के बाहर फेंक दिया. He reeled backwards, tripped on his bedding and landed on the suitcase. Okay, अब जब train motion में है and he's being thrown out, he's like थोड़े से पीछे की तरफ गए and then he tripped and on his bedding and he landed on his suitcase. Toodaloo! Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. Okay, Mohan was like so shocked with this, what has happened with him. Okay, he stared at the lighted windows of the
train going past him in quickening tempo. अब वो देख रहे हैं कि ट्रेन से इनको तो बाहर फेंका गया है and the train is moving, okay, very quickly. The tail end of the train appeared with a red light and a guard standing in the open doorway with the flags in his hand. So he's now seeing that the train is gone. Train उनको वो प्लेटफॉर्म पे ही है और ट्रेन उनके सामने, आंखों के सामने निकल गई है. In the interclass Zenana compartment was Lakshmi, fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station lights. Her mouth was bloated with beetle saliva, which she had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station. So अब इंटर क्लास में आराम से बैठी है इनकी वाइफ लक्ष्मी, जिसका मुंह पूरा पान के सलाइवा से भरा हुआ है. ओके, एंड शी इज जस्ट वेटिंग कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ दे एंड शी विल स्पिट दैट सलाइवा आउट ऑफ हर माउथ. ओके, as the train sped past the lighted part of the platform, Lady Lal spat and sent a jet of red dribble flying across like a dart. Okay, and जैसे ही ट्रेन वहाँ से स्टेशन से निकल जाती है, she spat out of the window. Okay, it was like a red dribble which was flying in the air. Okay, so this was written by Khushwant Singh. Beautiful story, and this is children, ये ऐसे होता था उस ज़माने में. जो लोग बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, स्पेशली इन इंग्लैंड एंड ऑल, उनको एक अलग ही एटीट्यूड होता था. एंड दे आर द वे वो इंडियंस को देखते थे, उनको लगता था कि इंडियंस आर वेरी डाउन ट्रोडन, उनको कुछ नहीं पता, उनको कोई मैनर्स नहीं है, उनको कोई तमीज़ नहीं है. एंड वी आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वी कैन चेंज द वर्ल्ड. ओके, एंड nobody is the best like us, but someday or the other they have to pay a price for it. Okay, because the Britishers never treated the Indians in a good manner. For them, Indians were always like a slave for them, और उन्होंने कभी भी रिस्पेक्टफुली नहीं देखा. आप कितने भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, आप कितना भी इंग्लिश में बात करो, बट फॉर ब्रिटिशर्स दे वर ऑलवेज लाइक अ स्लेव टू देम. Okay, and they never treated Indians well, whereas Indians did not treat the well-educated Indians did not treat the other Indians well. All right, but someday or the other you have to pay a price for this. All right, so children, now quickly read this beautiful chapter written by Khushwant Singh. Okay, and Khushwant Singh is an eminent Indian novelist and journalist. He was born on 2nd February 1915 in Punjab. He is known for his strong secularism, humor and abiding love of poetry. Singh's weekly column with malice towards one and all, carried until recently by several Indian newspapers, was among the most widely read columns in India. Khushwant Singh served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers through the 1970s and 1980s. He is a recipient of the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, and he died on 20th March 2014 at the age of 99 in New Delhi, India. So खुशवंत सिंह जो थे वो काफ़ी फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, एंड ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट सेक्युलरिज्म. ह्यूमर अच्छा था उनका. ओके, एंड ही हैड अ लव फॉर पोएट्री. ही वॉज अ ग्रेट पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, एंड उनके जो कॉलम्स थे दे वर वेरी वाइडली रेड ऑल ओवर इंडिया. न्यूज़पेपर कॉलम्स में वो जहाँ पे लिखते थे. ओके, एंड उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था. ओके, विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. Air of pity and patronage means mixed feelings of inferiority and superiority. Okay, which this person had. सर मोहन के पास था, क्योंकि उनको inferior भी feel हो रहा था, उनको superior भी feel होता था. So he used to feel inferior because obviously he was an Indian, and superior because he was so well educated and went for education to England. Okay, carnation is a sweet smelling flower that is often worn in men's suits on formal occasion. Okay, Balliol is short form of Balliol College, Oxford. Umpteenth is several times. Livery is special uniform worn by waiters.
Ruminate means to think deeply. Zenana is ladies, okay, in Persian. Ambled means to walk slowly in a very relaxed manner. Replenish matlab refill karna. Vizier is important government official. Nocturnal means take place at night, okay, anything with regards to night, okay, like even the owl is considered as the nocturnal bird because it is awake at night. Squat means thick and unattractive. Sang-froid is ability to keep calm in dangerous or difficult situations, okay. Tickety-boo in a correct and satisfactory manner. Opinionated means expressing very strong opinions about things. Rugger is the informal word for rugby matches. Sordid means distasteful, yeah, scornful. Studied gait मतलब carefully planned way of walking, okay, कैसे आप carefully you are walking with style, okay. Trudging मतलब long and tiring walk. Haversack is a small strong bag worn on the back, okay. Air is here. Nigger is a person of black complexion. Inebriated means drunk or under the influence of alcohol, somebody who's drunk. Preposterous means nonsense, yeah, absurd. Bloated means to swell or fill. All right, now, Indianization of English is the process through which the form of English is changed, altered, or rather modified with the view to make it more conveniently acceptable and usable for Indian speakers or users. So, Indianization of English का मतलब ये है कि ये process ऐसा process है जहाँ पे इंग्लिश के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है, ऑल्टर किया है या फिर मॉडिफाई किया है ताकि सबको कन्वीनियंटली बोलने के लिए और यूज़ करने के लिए ईजी हो जाए. The Indianization of English literature refers to the process by which English literature produced in India or by Indian authors incorporates Indian themes, culture and perspectives. So, Indianization of English literature में इंडियन थीम्स को, कल्चर को या फिर उनके पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया है, ओके, इन देयर राइटिंग्स, ओके. This phenomenon emerged as a result of the historical and cultural interaction between India and the British colonial rulers during the colonial period. Okay, so ये actually ये idea जो आया of English literature, of the Indianization of the English literature, this was because of the Indian authors. Okay, जो it was the phenomenon which was introduced by them. Okay. एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल इंटरेक्शन जो है इंडिया एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो हो रहा था उसके बेसिस पे आया. ओके, कार्बा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज इट डील्स विद इंडियन थीम, कल्चर एंड इट यूजेस सम हिंदुस्तानी वर्ड्स सच एज कोई है, ज़नाना एंड एक छोटा. सो दैट मीन्स इन द राइटिंग, ओके, जो वो लिख रहे उसमें दे आर यूजिंग इंडियन वर्ड्स ऑल्सो, जैसे कोई है फॉर एनीबडी देयर, ओके, ज़नाना फॉर लेडीज, ओके, एक छोटा मीन्स वन स्मॉल. सो दे हैव यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स इन देयर डायलॉग्स ऑल्सो. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. So children, this beautiful story, okay, talks about karma. Okay, karma is a cycle of life. Okay, so what you give, as you say, okay, there is a saying, okay, as you sow, so shall you reap. Okay, so अगर आप कुछ गलत करें, okay, if you're doing something bad to others, okay, it will eventually come back to you. So he was not treating the Indians well. Okay, यहाँ पे जो सर मोहनलाल थे वो इंडियंस को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. He was very proud of his English education and English culture and mannerism that he had, कि वो इंडियंस को अच्छे से सर्व नहीं करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे उनके साथ. He used to consider them as like, you know, low class people and all. But what happened to him? Eventually the Britishers, the English, उन्होंने भी उनको वैसे ही consider किया. So that is your karma. Okay, what you give comes back to you. Okay, that is the reason why we have to be very careful.
okay, with what we say, the way we behave, okay, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा बनेंगे तो एक ना एक दिन we have to pay a price for it. Alright, now quickly read this chapter because you need to do question time जिसमें आएगा reference to context, then you have choose the correct options, then you have answer the following questions and think and write. चलो अब मूव करते हैं ग्रामर स्टडी की तरफ. So far we have done the interchange of affirmative and exclamatory. We've done the change of affirmative and interrogative. अब हम करेंगे affirmative and negative sentences में change करना. Okay? Affirmative, negative. So यहाँ पे not आएगा plus opposite of verb or adjective or adverb. Okay? So I am doubtful will become I am not sure. Not is the opposite of doubt. Brutus loved Caesar. Brutus did not hate Caesar. Okay? Only if your line, okay, if your affirmative sentence begins with only, okay, then it will change to none or no one plus but or except. So only a fool can do such nuisance. None but a fool can do such nuisance, or except no one except a fool can do such a nuisance. Only he can change the laws. No one but he can change the laws. अगर only middle में आता है affirmative sentence के तो वो change हो जाएगा nothing but या except में. He drinks only black tea. He drinks nothing but black tea. She wears only western dresses. She wears nothing except western dresses. Okay? Okay, now as soon as या hardly या scarcely से अगर आपके affirmative sentences शुरू होते हैं तो it will change to no sooner than. Okay? As soon as he entered, we stood up. No sooner did he enter than we stood up. Hardly I had seen you, you fled. No sooner had I seen you than you fled. Okay? अब अगर आपके sentences में आता है to, okay, तो it will change to so that plus subject plus can or could plus not. He is too old to walk. ये change हो जाएगा. He is so old that he cannot walk. She was too lazy to be fast. तो ये change हो जाएगा. She was so lazy that she could not be fast. Okay? अगर आपके affirmative sentence में आता है and और both, and और as well as, तो वो change हो जाएगा not only या but also में. Okay? Sam is a social worker and a teacher. Sam is not only a social worker but also a teacher. Parul made a robot as well as a car. This will change to Parul not only made a robot but also a car. A verb 1 या verb 2 will change to fail plus infinitive plus verb 1. Okay? So when opposites cannot be formed in a sentence. Alright? I visited the Taj Mahal. I did not fail to visit the Taj Mahal. She plays volleyball. She does not fail to play volleyball. Okay? So अगर आपके sentence में, okay, there are the words are used in such a manner कि आपको उसका opposite word नहीं हो सकता है, तो आप उसको change करोगे into fail. Okay? You will use the word fail in your context. Okay? अब miscellaneous में आएंगे. He is a butcher. It is not that he is not a butcher. I know he is a teacher. I do not deny that he is a teacher. I failed to keep my words. I could not keep my words. She always fails to accompany us. She is always unable to accompany us. This is the tallest building. No other building is so tall as this one. Manoj is smarter than his friends. Manoj's friends are not so smart as Manoj. My uncle is as rich as my father. My father is not richer than my uncle. Whenever it rains, it pours. It does not pour without rain. Should I forget those happy days? I should never forget those happy days. He tried all possible means to help us. He left no means to help us. Little did anybody know about him. Nobody knew much about him. I always lay plans without failure. Never do I lay plans which fail. Okay? Now, transform the following affirmative sentences to negative sentences. They found the road very good. Okay? तो इसको आपको change करना है into a
नेगेटिव सेंटेंस. ओके, दे फाउंड द रोड वेरी गुड. तो इसको चेंज हो जाएगा, दे नेवर फाउंड अ रोड दैट वॉज बेटर. ओके, I saw your brother. I did not see your brother. Clear? Likewise, do the rest of them. He is not so rich as his brother. So यहाँ पे आया है, use किया है हमने. He is not so rich as his brother. So इसका आएगा, his brother is richer than him. Okay. She is not dull. That means she is pretty. Alright. So likewise, do the rest of them. Words study. Rewrite the sentences replacing the underlined words with the phrasal verbs. Paragraphs are mentioned in the brackets to find the required phrasal verbs from the story. So story में से आपको इन words के phrasal verbs निकालने हैं और आपको इसमें replace करना है. Alright. Read the dialogue given below and then complete the passage. Okay. So dialogue को पढ़ो और बाकी passage को आपको complete करना है. Alright. Listening time में you have to listen to the passage carefully जो आपकी मैम पढ़ेगी and then you have to answer the following questions. Speaking time में you say karma is the ultimate result of all our deeds. Okay, so karma is what is the result of whatever we do, our deeds. Okay, make a team of 2 students and each team will narrate a story based on the theme of karma. Students are supposed to create their own creative story. ओके, सो इस बेसिस पे, इस थीम पे आपको स्टोरी बनानी है और उसके बारे में बोलना है. ओके, राइटिंग टाइम में आप लिखोगे ऑटोबायोग्राफी. ओके, सो आप किसकी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मास्क डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. एक मास्क की कलर एंड कंपनी ऑफ द मास्क, हु वोन द मास्क, ओके, एंड वाई, प्लेसेस वेयर द मास्क इज वोन, फीलिंग्स ऑफ द मास्क एंड द पर्सन हु वोर इट. ओके, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द मास्क एंड इट्स इम्प्रेशन. सो मास्क के बारे में आपको स्टोरी लिखनी है, आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, अ थिंक दैट यू आर अ मास्क. ऑलराइट. So children, quickly start reading the chapter all over again. It's a beautiful lesson to learn, okay? Not to throw attitude, okay? What we give to others will always come back to us, okay? So do not do that, okay? It's just like a boomerang. Boomerang को आप जब फेंकते हो, वो लौट के आपके पास ही आता है. So that's what this chapter is telling us, okay? जल्दी से chapter पढ़ो, उसके बाद do the back exercises, followed by grammar. Grammar को भी अच्छे से पढ़ना है and then do the grammar exercises, then get on to the speaking skill की activity and then on the writing skill. Alright children, get going.